Good morning, class 9th. Today we will do remaining question of exercise 7.4. Yesterday I gave you as a homework and I hope many of the students have done this question. So now look here. Question number 4 says AB and CD are the respectively smallest and the longest side. It means in this quadrilateral AB is smallest and CD is longest side. Okay. So first of all we have to write here the given things. AB is less than CD, or we can write AB is smallest. AB is smallest and CD is longest. Okay. Now we have to prove or to show angle A is greater than angle C as well as angle B is greater than angle D. Okay. So how can we prove it? Look here. हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? A और C को ज्वाइन करा देंगे. ओके. ज्वाइन A and C. Now proof. We can give the name of these angles 1, 2, 3 and 4. ओके. अभी आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे दो सेपरेट ट्राइंगल जो है फॉर्म हो गए हैं. पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी की. इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी और वी कैन राइट बी सी इज ग्रेटर देन ए बी. हाउ? बिकॉज ए बी इज स्मॉलेस्ट. ए बी इज smallest. Okay. So as you know the theorem, angle opposite to longer side is greater. So BC जो है कि longer side है, तो BC के opposite angle कौन है? Angle 1 है. So we can write here angle 1 is greater than angle 4. Okay. By theorem, angles opposite to longer angle opposite to longer side is greater. Okay. Say equation 1 again. In triangle ACD we can write in triangle ACD CD is greater than AD. Why? Because CD is longest. Because CD is longest. It means इस क्वाड्रिलेटरल में CD से बड़ी कोई रेखा नहीं हो सकती है. Okay. If CD is longest, so the opposite angle of CD is 2. Okay. So here we can write angle 2 is greater than angle 3. Say equation 2 from same reason. Angle opposite to longer side is greater. Okay. एग्जामिनेशन में रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं. ओके. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. 1 and 2 को ऐड कर दे आप. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4. सो एंगल 1 and एंगल 2 फॉर्म एंगल ए and angle 3, 4 form angle C, hence proved. Okay. Similarly, same procedure को आप similarly angle B is also greater than angle wait angle B is greater than angle D. Okay. Proved. I hope you understood. Now this is last question of this chapter and exercise. In figure PR and PQ, you can see here PR is greater than PQ in length
and PS bisect angle QPR. It means both the angle are equal. Okay, so we can write here angle X is equal to angle X. Both the angles are equal, so we can represent these angle by X or by 1 and 2. You can also use by 1 and 2. Okay, 1 and 2. You can show this angle 3, 4. Okay, leave it. Look, prove that angle PSR, where is PSR? PSR is greater than PSQ. Okay, so this is our target. Okay, let's do it. The given things, PR is greater than PQ and angle QPS is equal to angle RPS. ओके, ये दिया हुआ है। ये दो चीज़ें हम लोगों को मालूम है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव एंगल PSR is greater than angle PSQ. So first of all we have to use this value in proof. In triangle PQR, PR is greater than PQ given. Okay, if PR is greater than PQ, so as you know by theorem 7.2, PR के opposite angle Q and PQ के opposite angle R. It means angle Q is greater than angle R. Okay, from theorem 7.2 or 3 etc. Now you can add this angle. You can see here equation 1, adding equation 1 in this value. So we can add angle Q plus angle QPS, okay, is greater than angle R plus angle P, angle RPS. तो हमने क्या किया? हमने दोनों तरफ इक्वल्स वैल्यू को ऐड कर दिया, जिससे इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पे आपने लिख देना है, आपने दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज जो है कि ऐड की फ्रॉम वन में आपने शो किया। अभी क्या ध्यान देना है? ये दोनों एंगल किस एंगल के बराबर है? एंगल PSR. ओके, वाई? Because angle PSR is exterior angle of triangle PQS, and as you know exterior angle is equal to sum of opposite interior angle. Okay, तो angle Q plus angle QPS की जगह हम लोग लिख सकते हैं angle PSR, and angle R और angle RPS की जगह हम लिख सकते हैं angle PSQ by exterior angle property. Okay, hence proved. बहुत ज़्यादा easy question था ये. I hope you understood. I am giving you some extra questions. This is question number 1, and you students will try to do by yourself. Question says in figure AD is the median of triangle ABC. Okay, AD is median of triangle ABC. B is perpendicular on AD as well as CF is perpendicular on AD. So prove that B is equal to CF. Okay, तो आपको प्रूफ करना है कि B और CF आपस में बराबर होगा. And this is question number 2. In figure ABCD is a square, M is the point on side AB and PQ is perpendicular on CM. Okay, you can see here CM. Prove that CP is equal to CQ. So where is CP? CP is here. So you need to prove CP is equal to CQ. Okay, I hope you will do better. And one more thing, आप दोनों क्वेश्चंस पहले तो अपने कॉपी को आप कंप्लीट करेंगे और उसको अपने अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजेंगे. क्लास 9th E के सारे बच्चे मुझे अपना वर्क कंप्लीट करके भेजिए. साथ ही साथ इन दोनों क्वेश्चंस को भी
सॉल्व करके आप भेजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।